61 रन आया। इसके बाद शुरुआती विकेट जब भारत ने झटके तो दबाव निश्चित रूप से अमेरिका पर बनाया। गेंदबाजी में भारत ने काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है, कभी भी दबाव से निकलने नहीं दिया है अमेरिकन टीम को, और यही वजह रही है कि रनों के लिए संघर्ष करती रही है अमेरिका की टीम। गेंदबाजों ने उनको जरूर उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाज वो काम आगे नहीं कर सके। हालांकि संजय और मिलन के बीच अच्छी भागीदारी हुई थी चौथे विकेट के लिए। जब मिलन का विकेट गया तो उसके बाद भारत ने अच्छी वापसी की है। 2 सफलताएं अक्षय पटेल को मिली थी। अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति 17 ओवर के बाद 104 से नुकसान पर। साधु, मेरी गूगल जेमिनी क्रेजीएस्ट फैन कॉन्टेस्ट की एंट्री है। Oh wow! थैंक्स दद्दू। Rejected. She's the boss. दद्दू, what is this कद्दू? इसमें क्या खराबी है? जेमिनी के साथ थोड़ा और क्रेजी हो सकता है। गूगल जेमिनी पर अपना क्रेजी लुक बनाइए, ऐसा वैसा जैसा भी क्रेजी, और सोशल मीडिया पर गूगल इंडिया को टैग करके हमें भेजिए और हम उसी लुक में आपको T20 वर्ल्ड कप दे देंगे। जीत के लिए 58 रन बनाए 18 गेंदों में। आने बहुत ही मुश्किल है, अगर संभव नहीं है। स्टीव का अंतिम ओवर आना बाकी है। अपने स्पेल पर चौथा ओवर डालेंगे, 1 विकेट निकली हुई 11 रन देकर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है। काम काफी मुश्किल है अमेरिका के लिए, हर गेंद पर से अधिक रन चाहिए। एक रन काफी मुश्किल हो रहा है, और वहां पर अर्शदीप गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद को बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए 1 रन तो अब बिल्कुल भी अमेरिका को जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। क्या शुभम अब और ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाएंगे? 12 गेंदों में 17 रन बनाएंगे। जरूरत है अब अमेरिका को 17 गेंदों में 57 रन की। तो अर्शदीप पर भी जिम्मेदारी है कि न सिर्फ रनों के बहाव को रोकें या रन बड़े आने दें, बल्कि विकेट भी भारत के लिए निकालें। अभी तक तो काफी अच्छी गेंदबाजी की है। इससे पहले जो 3 ओवर किए थे सिर्फ 11 रन देकर 1 विकेट लिया था। काफी सफल गेंदबाज है भारतीय टीम के लिए, खासकर T20 के अंदर। और एक अच्छी गेंद स्लोअर बाउंसर था, वहां पर रन लेना चाहते थे। रनर का मौका बन सकता है अगर वो डायरेक्ट स्टंप से लगेगा। वो फील्डर कोई बैकअप नहीं कर रहे थे। अच्छा प्रयास है ईशान किशन का। शुभम अब आगे स्ट्राइक पर मोहसिन थे, वो जो स्ट्रोक खेला था, थोड़ा चोटिल भी है वहां पर। शुभम अच्छी करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, उन्होंने तो भाग्य के सहारे छोड़ दिया। गेंद थोड़ा सा स्टंप से दूर निकल गई, 1 रन अर्जित होता हुआ। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव आज टीम 11 के हिस्सा नहीं है। जसप्रीत बुमराह थोड़े सा स्वस्थ थे, इसलिए आज वो इस मैच में नहीं खेल पाए। अगला मैच भारत को 12 तारीख को नामीबिया के खिलाफ खेलना है दिल्ली में। मोहसिन जो भी 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, स्कूप करना चाहते थे, फील्डर से 2 और उड़े गई गेंद। ड्राइव लगाई जरूर थी वहां पर वरुण चक्रवर्ती ने, गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए 110, 6 विकेट नुकसान पर। स्कूप किया था इस गेंद को और बढ़िया तरीके से खेला। बहुत जल्दी देखिए ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर निकल गए। गेंद का इंतजार किया और अंत में इसको हवा में खेला। हालांकि फील्डर वहां पर थे वरुण चक्रवर्ती, लेकिन उससे थोड़ी सी दूर रह गई गेंद। टाइम लगाने के बाद भी नहीं पहुंच सके इस गेंद तक। 4 रन, अहम 4 रन इस समय आए हैं, और अब तो लगभग हर गेंद पर चौका चाहिए ही चाहिए। इस समय अमेरिकन टीम को 15 गेंदों में 52 रन, यानी मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ गई हैं। अर्शदीप गेंदबाजी, और इस बार हवा में उठाकर खेला मिड विकेट पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। तिलक वर्मा वहां पर सुरक्षित मौजूद। भारत के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में शुमार तिलक वर्मा एक और विकेट गंवाया है। इस समय अमेरिका की टीम ने मोहसिन के रूप में एक सफलता और अर्शदीप के खाते। शॉर्ट गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे। बाउंड्री पर तिलक वर्मा मौजूद थे, आगे आए और जज किया और बहुत ही सुरक्षित हाथ कम के और बढ़िया कैच पकड़ते हुए दूसरा कैच पकड़ा उन्होंने अब तक इस पारी में। 110, 7 विकेट नुकसान। मोहम्मद वसीम 8 रन बनाकर आउट हुए, 9 गेंदों का सामना किया। यूएसए 110, 7 विकेट नुकसान पर। 17.4 ओवर का खेल हो चुका है और अब 2.2 ओवर का खेल आनी बाकी। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 22.29 का है।
लेकिन लगभग 23 रन बनाने होंगे हर ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। आज हमने सुबह देखा था पाकिस्तान को 2 ओवर में 29 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए, और फहीम ने शानदार बल्लेबाजी की थी और एक ओवर में 24 रन बना दिए थे। तो बहुत आसान हो गया था फहीम अंतिम ओवर में मैच जीतना पाकिस्तान के लिए। एक बार नीदरलैंड ने जरूर मुश्किल में डाला था पाकिस्तान को। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सफलतम गेंदबाज जो रहे थे वेंस क्वेविक, उनको 4 सफलताएं मिली थी आज नॉर्मल पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शेडली वेंस क्वेविक। पहले गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, 4 विकेट लिए और अब बल्लेबाजी की बारी है। हालांकि बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं इस समय उनकी टीम के लिए। उन्होंने अभी तक जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया है वो है 18 रन का, उससे बहुत ज्यादा आगे निकलना होगा। इस बार छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, अपने आप को नीचे झुकाया, विकेट कीपर के पास जाने दिया, रास्ता दिया एक तरह से इस मौके पर। तो रिक्वायर्ड रेट अब हो गया 24 का, यानी हर गेंद पर चौका तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। अमेरिका को बहुत रणनीतिक जाल में बुना और उसमें फंसाया एक तरह से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अमेरिकन टीम को। बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती रही है अमेरिकन टीम क्वालिफायर्स में, और फिर कई बार उसने अपने परिणाम से, अपने रिजल्ट से चौंकाया भी है। लेकिन भारत के सामने इतना काम आसान था नहीं। भले ही 162 रन का लक्ष्य था, लेकिन वो बहुत मुश्किल। ओवर की समाप्ति तो कुल मिलाकर 18 ओवरों के बाद स्कोर 111, 7 विकेट के नुकसान। वो शर्मिल का बच्चा खो गया। मेरा आधा ढूंढने का है, चलिए। साहब आपने तो कमाल कर दिया। इरादे बड़े हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। And this 3 matches today, some real interesting games. This is the 3rd one that we completed. Tomorrow coming up, first up it's Afghanistan taking on New Zealand, and we'll come to you live from Chennai. It should be a cracking contest. You know how dangerous Afghanistan can be. New Zealand have a terrific ICC record in whatever format of the game. It's going to be a tough group, isn't it? South Africa in that group as well. It's to look forward to. And back here. Right, early tomorrow, because 3 p.m. local time, England playing their first game. They've been in good form in Sri Lanka against Nepal. They've been themselves in very good form, so lots to look forward to there. Sri Lanka against Ireland in the evening match. They do get a lot of support in Nepal. They would get hearing it's a sellout here. They come out in numbers. That's gone long. Clear in the fence. Not quite coming out right. Goes again, will land safely. Get a couple of runs. Just 8 balls remaining. Mohammad Siraj should bowl the final over. Andrew Sampson out in the field. Substitute.
Siraj won't reach it. You look back at today, I think the most positive thing is Surya's innings, because you want a captain starting off the World Cup in prime form. It helps you as a leader as well on the field, especially the situation India was in. You take a lot of heart and confidence out of that performance. He just looks so calm. I know he had that bit of luck, and we'll talk about that later, I'm sure, and those that are watching it live will realise the magnitude of that moment when you look back on the game. But let's face it, most people who make an innings of real substance have a little bit of luck along the way. 21 for 7. So final over of the innings, just 6 balls remaining. That's how things have panned out. 161 India in reply. United States 121 from 9. Mohammad Siraj. Nicely played. It's inside the line and that uses the pace. Played really well, hasn't he? He really has. You can see he's limping his way through his innings, but let's hope that he recovers, that he can continue on his good form. He's played sensibly. It's an intelligent shot, bearing in mind the pitch and the conditions. I think look back today, Siraj will be mighty pleased with his effort. Even the call up late to come into the side. He's responded well. Don't forget that if India win this game, which they look as form favourites to, it will be the lowest total defended at the Wankhede in T20 internationals. Also, India have not lost to an associate team in T20s yet. And it will be their 9th consecutive T20 World Cup tour. Overall, we'll be pretty pleased. And they would have learned a lot from this contest as well. Maybe how to be flexible when occasion demands. I think you've also got to give credit to USA, the way they started the game. I mean, inevitably, you look at the senior side, you think they're the ones that have messed up, and sometimes forget actually that USA. That has gone a long way. That'll do. It's going to be nowhere near enough, but they have had some encouraging signs, certainly USA, and they can take plenty from the game. That's a big hit into the crowd, and good job. Boy was kept his eyes on the ball, catches it, kicks it off the other young man there, and says, "It's my ball." I thought that planning was excellent. Abhishek, and it was easy when he hits it straight to deep cover, but that's where he scores his runs. A lot of the time on the offside, I thought Ishan Kishan, they set a leg side deep square. That's where he scores a lot of his runs. In the end, good planning work. It put a very good side under pressure. So just 1 ball remaining, 31 needed. White signal.
Siraj reckons he might have just got some battle. He did. That's what he went up. Well, the figure's gone up. So India win. The wide not given. Siraj ends up with a wicket. And India win by 20 end runs, and the defending champions get the first game out of the way. Yeah, they'll be mighty pleased. They were tested, and they were tested at the start and in the middle of their innings, and it took something extremely special from their skipper to get them into a position where they could go on and win the game. The bowlers have been pretty good throughout too. Good work out for India, but USA, as I said earlier, will take plenty from the game. They deserve lots of credit. They were pushed hard. That man there, simply the difference between the two sides, really. It's India who win this first game by 29 runs. So not the huge celebrations that you'd expect, but they will too realise that they have things to work on, that is for sure. But, USA will hope that some of those injuries that they've picked up, Shubman at the end, Ali Khan as well, he bowled really, really well. Hopefully he'll recover and be able to continue on in the tournament. They are the favourites to go on and win this competition. And they have just shown just a few areas of concern. But, like all good sides, they find a way. And that man there has helped massively to get his side through their first victory. Strange evening at times here at Wankhede Stadium. It was very quiet, and that was because USA were on top for periods of the game. But in the end, the class of Surya Kumar Yadav coming to the fore. So an interesting first day. All games at times just swinging one way and then back the other. Pakistan themselves were under great pressure. Fahim Ashraf finding a way of getting them over the line. Kumar Yadav, Romario Shepherd in the second game. Scotland, feisty Scotland, finding a way of competing against West Indies, having not played much cricket at all, and a late addition to the tournament, so credit to them. So never going to be a straightforward target. 160 you felt on this surface, shifted a little bit more and a little slower than we thought. Not the power play they'd hoped, 34, 37, 37. So moments in the middle there to set things up, to try and get them over the line, but a little bit of inexperience and some excellent bowling and some good captaincy. Just fell a little bit short in the end, 132 for 8. Wickets throughout pretty much. A couple of wickets for Arshdeep, who showed his class at the top, and Siraj, well, finishing with a wicket right at the end, but did a good job initially as well. And, back into the side is the late replacement for Harshdeep Rana, who's now out of the tournament. Chakravarti miserly with a wicket from 24, Axar 2 for 24. And Hardik, well, not his best evening, but still a reasonable outing for Hardik in a slightly different role as well. Usually takes the new ball, today not so, and bowling more in the middle overs and
there we are, the headline act, the story of the evening really, 84 not out from 49. It never looked like they were going to get anywhere near 161, and they only managed it because of the excellence and brilliance of the skipper. Contributions from Tilak back in the side, Anish Sankisha, but it wasn't easy in the power play for both sides. Took them there with 37 and Sanjay with 37. And so Beck with 2-4 for 25. And to the couple, so India winning by 29. Let's get down and join Harsha. Indeed, and the ICC Player of the Match today, the award will be presented by Kavita Singh, who's SVP Lloyd Aramco. No surprise at all, Surya Kumar Yadav, for his innings of 84 of 49 balls, 10 fours and 4 sixes, striking at 171. Dare I say, one of the better innings, and I've seen so many. If you, Sky, you keep saying all along, you were batting very well in the nets. What was the transformation to batting so well in the middle? I knew definitely someday it was going to come. Last whole year I was trying to bat in such way, hold the innings for the team, but it wasn't happening. But then I left it alone after I played the last series of last year against South Africa. Packed my kit bag, spent a lot of time with family for 2 weeks. Then started in the new year, and when we went to Nagpur, it was a different feeling altogether. You were 21 of 22 balls at one stage. The team was 77 for 6. Did you still feel in control at that point? I always felt that there was a need for a batter to bat till the end. I never felt that it was a 180, 190 wicket. I felt it was a 140 wicket. But then Gautam told me the same thing during the break after the 14 overs. He told me just bat till the end, you can cover it anytime. And also, most important thing, I have played a lot of my cricket in Bombay, this wicket, and also Maidans of Mumbai cricket. So I know how to bat on similar kind of wickets. So was today's innings primarily about understanding a situation, understanding a pitch and adapting as you went along? Absolutely. I mean, 77 for 6, and then from there, batting till the end. You had to understand that one batter had to bat till the end. I just kept counting who was about to bowl at that time, and checked on how many balls were left, and I was just trying to play good shots and my shots. Well done. We're not done talking with you yet. We'll come back in just a little while, but well played today. Our ICC Player of the Match is Surya Kumar Yadav. Thank you. Live telecast of ICC T20 World Cup 2026 presented by Amul, the taste of India. Strike Cutter, Thandrak. नई HF Deluxe Pro, नई Indian Deluxe Bike. खुशियों का सफर. Hero Splendor Plus. Fill it, shut it, forget it. Stable Money. India का FD Booking app. UIDAI. मेरा आधार, मेरी पहचान. Co-presented by Google Gemini. Craziest fan con. Co-powered by Indra IBL. In association with Ultratech, देश का #1 cement. NPCI, आओ मिलकर बनाएं स्कैम रहित भारत. माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है. सेंसोडाइन, झंझनाहट से दी रोजाना सुरक्षा. Live telecast of ICC T20 World Cup 2026 presented by Amul, the taste of India. Strike Cutter, Thandrak. नई HF Deluxe Pro, नई Indian की Deluxe Bike. खुशियों का सफर. Hero Splendor Plus. Fill it, shut it, forget it. Stable Money. India का FD Booking app. UIDAI. मेरा आधार, मेरी पहचान. Co-presented by Google Gemini. Craziest fan con. Co-powered by Indra IBL. In association with Ultratech, देश का #1 cement. NPCI, आओ मिलकर बनाएं स्कैम रहित भारत. माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है. सेंसोडाइन, झंझनाहट से दी रोजाना सुरक्षा.
जीत दर्ज करके डिफेंडिंग चैंपियंस टीम इंडिया ने आगाज किया है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक विनिंग नोट पर। बट द वे दे वर पुश्ड अप बाय यूएसए इट्स इंडीड कमेंडेबल। कह सकते हैं सूर्य की वो पारी रही एक तरीके के छतरी की तरह जिसने साथ दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर से उनको नवाजा गया प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से। बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं फोर्थ एंड फाइनल डीडी स्पोर्ट्स। मैं शिखा सचदेवा और मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा। अंजुम, इंडिया वन, बट द वे दे वन, I think you have a lot to talk about that. They do. I mean, at the end of the day, जीत हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन जीत के साथ साथ तो थोड़ा समय मिल जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली कि आप ये देख सकते हैं कि क्या सही हुआ और क्या कम अच्छा हुआ। पहली चीज तो ऑफकोर्स रन बहुत ज्यादा नहीं थे बोर्ड पर जिन परिस्थितियों में थे वो परिस्थितियां, जैसे सूर्य ने कहा ना प्लेयर ऑफ द मैच लेते वक्त, मुझे लगा था उनको, दैट इज सूर्य को, कि 180 की विकेट थी या 140 की विकेट थी, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज थी कि भारतीय टीम 160 प्लस पहुंच पाई। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यूएसए की टीम ने जो एक साझेदारी बन भी रही थी वहां से उनको कैपिटलाइज करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। नॉट बिकॉज मैं चाहती थी कि यूएसए जीते, बट बिकॉज कि वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी भारतीय टीम को और चैलेंज करने की, जो नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल चैलेंज कर सकते थे, लेकिन too many positives there for the team USA as they commence further into the tournament. नजर डाले थे बैटिंग कार्ड पर that how well they played rather with the bat. चाहे ये जिस तरीके से वो जीत दर्ज नहीं कर पाए, they couldn't cross over the line, but as I said, too many positives there from them. दोनों ओपनर जल्दी वापस चले गए, लेकिन कप्तान मुनाफ पटेल ने तो खाता ही नहीं खोला। 34 रन कुमार और कृष्णमूर्ति किस तरीके से वहां हमें मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी साझेदारी दिखी, बट जैसे कि आपने कहा कि सूर्य ने कहा 180 की एक जिस तरीके से पिच से एक विकेट थी, 132 बंडल आउट किया, जबकि